हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 85। इसमें हमें शॉर्ट हैंड का एक पैसेज दिया है जिसको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है। हम इसको रीड करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ट्रूथ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स: ट्रूथ अबाउट थिंग्स, truth of thought about things, and truth in the accurate expression of thought about things. According to ancient authorities, truth could be said to be a correspondence between thought and thing. It seems perfectly easy for anyone to think accurately about a thing with which he is quite well acquainted. But the case is not quite so simple as that, and there is without doubt a great deal to be said before it can be called simple. Suppose an unfortunate accident occurred in a London street and that 6 people witnessed the accident and were asked to relate exactly what had happened. It is quite certain that we should receive different accounts from each of them. The result would not be a correspondence between thought and the thing thought about, and so the statements would not be true. It is to be regretted that limited space prevents a more extended argument, though we could extend it if we cared to do so. Stop. ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है। होपफुली आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय।